Hello everyone, good evening guys and welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. Myself Rohit Sharma and here we are with a new current affairs session of the series Current Affairs SAMVAD. Yes, I hope you all are aware that we do this particular series which is known as Current Affairs SAMVAD, and in this particular series what we do is we do the current affairs of the past 2 to 3 days. And in today's episode, we are going to cover the current affairs from the 10th of February to the 12th of February. So good evening everyone. I hope each one of you is doing absolutely well. Guys, here we are with a new session, with the new episode of the series Current Affairs Samvad. Now, these episodes are very, very important for you if you are undergraduate students, if you want to appear for entrances like CUET and others. These episodes are really, really important for all of you. Now, if you are somebody who is a who is a law aspirant, we do have an episode which is known as Legal Darpan, right? We do have a series on that. There is a playlist on PRATHAM Test Prep's YouTube channel where you can find this particular Legal Darpan sessions. These are basically law related sessions. Now apart from that, if you are somebody who is a newspaper enthusiast, so we do have newspaper analysis videos, right? We do have the newspaper analysis sessions which we conduct on a daily basis from Monday to Friday at 11:30 am. Apart from that, if you're somebody who wants to dive deep into any current affairs topic, so we do have deep dive sessions which typically gets conducted once or twice a week, right? Now I'm sure that for all of you, vocab is an integral part of your entrances, so we do have boost your vocabulary sessions. These sessions are usually conducted thrice a week, so we do have these sessions as well wherein you can boost your vocabulary. It is very, very helpful. You can boost your vocabulary through interesting mnemonic aids and everything. So yes, in this particular current affairs Samvad episode, which goes live on every Monday and Friday at 8:30 p.m. I welcome you all to this particular session. My name is Juhi and let's start with the current affairs episode. But before starting with it, I have a quote for all of you. And today the quote for the day is, anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80, right? But all those who keeps learning, they always stays young. So this is the quote which is said by Henry Ford. So what is the crux of it? The crux of it is learning is important. Learning is important. It helps person grow forever and ever. It makes people, or it helps people stay younger forever and ever. So learning is really, really important. Now let's quickly see the first news of the day. The first news we have is from the category World Pulses Day. It is from the category Important Days, right? We do have a category in our current affairs Important Days. World Pulses Day is important as it objectifies the importance of pulses, right? Pulses are important. It can be lentils, peas, dried beans. These are the usually consumed pulses throughout, right? So pulses are important. Pulses are, it is a worldwide food. In every culture, pulses is used in some form or the other, right? So we do have World Pulses Day, which is observed on the 10th of February. Now, this World Pulses Day is, led by a very famous organization which is known as FAO. FAO is what? FAO is Food and Agricultural Organization. So this is what FAO stands for. FAO is Food and Agriculture Organization. Now, basically World Pulses Day is led by this particular organization, right? UN ने resolution pass करा था 2013 में कि World Pulses Day observed होगा on 20th of February, और इस particular day को FAO led करता है, right? Now one more thing,
majority of the food related organizations, majority of the food related international organizations have their headquarters in Rome, Italy, राइट. सो अगर आपको एंट्रेंसेस में कोई भी एक ऐसा फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आ गया, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पूछ लिए गए, एंड इफ यू आर नॉट श्योर कि उसका हेडक्वार्टर्स किधर है, एंड इफ यू सी रोम और इटली इन द ऑप्शंस, यू कैन मार्क दिस एज द राइट आंसर. In one of the previous YouTube sessions, I think we have had this particular session long time back where I have told you this mnemonic as well. Italy sounds very close to a food item which is known as idli, right? A South Indian delicacy idli. So इतना याद रख लेना, फूड रिलेटेड होगा. अगर आपको हेडक्वार्टर्स नहीं पता, इटली ऑप्शन में है. अगर फूड रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप रोम या इटली मार्क कर सकते हो, राइट? सो दिस वॉज अ क्विक निमोनिक एड फॉर यू. सारे केसेस में मतलब इट वोंट बी ट्रू, बट अगर आपको नहीं पता और आप एजुकेटेड गेस मारना चाहते हो, सो दिस कैन बी दिस इज अ ट्रिक विच कैन बी हेल्पफुल. ऑलराइट, so this particular World Pulses Day, it actually highlights or objectifies that why pulses are important. Pulses are basically seeds. Those are edible seeds of the leguminous plants. उसके हैं वो सीड्स, एंड ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विच आर दे आर प्रोटीन रिच, एंड दिस पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ पल्सेस एज यू कैन सी इन द इमेज एज वेल, right? Now, as I've told you that across the world, across the cultures, across all the cuisines, in some manner pulses is used, pulses are used, and the theme for the year 2023 for World Pulses Day is Pulses for Sustainable Future. Alright, and the Director General of FAO, Food and Agricultural Organization, जिसके headquarters के बारे में मैंने अभी बात की थी, it is Q Dongyu, and headquarters किधर है? रोम, इटली में. Alright, moving on to the next news, we have India's first ever municipal bond issued for retail opened, right? So पहला municipal bond, basically ये जो municipal bond का जो public issue हो रहा है, ये आपका इंदौर municipal corporation का हो रहा है, right? इंदौर municipal corporation has launched इंडिया का पहला public issue of municipal bonds, right? और ये bonds जो हैं 244 करोड़ के funds raise करेगा, और ये funds किस चीज के लिए होंगे? These funds will be for the solar power project. This is for the first time that such a municipal body is targeting individuals as investors in India, right? Individual investors को target किया जा रहा है basically for raising the funds for a solar power project. और ये कहाँ पर है? ये आपका basically इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, okay? And this will be first in India, right? This is also known as green bond. क्यों? क्योंकि ये solar power project के लिए है. That is the reason why it can also be termed as a green bond, right? Now there are villages in Khargone district of Madhya Pradesh. वहाँ पर ये जो solar photovoltaic power plants हैं, which are also known as solar PV फोटोवोल्टिक पावर प्लांट्स, वो उन वाले विलेजेस में साम्राज्य एंड अंशुखेड़ी विलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश खरगाना डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पे वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, वहाँ पे वो लगाए जाएंगे. एंड दीज म्यूनिसिपैलिटीज दे हैव बीन अलाउड टू इशू बॉन्ड्स. दे विल बी रेजिंग फंड्स पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सच एज रोड्स, वाटर सप्लाई, सेवरेज एज वेल. एंड IMC जो कि आपका इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये ऐसा पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है जिसने इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स से फंड्स रेज करने की बात की है, राइट? एंड इसके अलावा बेंगलुरु का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट हैज ऑल्सो द म्यूनिसिपल बॉन्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1997. उसके बाद ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया था 1998 में. लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर द फर्स्ट पब्लिक इशू ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड जो बहुत सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रेज करे, दैट इज IMC. ऑलराइट, नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट न्यूज, वी हैव Pfizer India appointed Meenakshi Nevatia as the new managing director, right? So Pfizer India ने मीनाक्षी नेवाटिया को एज एन एडिशनल डायरेक्टर
एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है फॉर 5 years, राइट. किसको रिप्लेस करा है इन्होंने? शी इज रिप्लेसिंग और सक्सीडेड एस श्रीधर, right? So the person who Meenakshi Nevatia has succeeded or replaced is S Sridhar, right? उन्होंने early retirement ले ली अगस्त 2022 में he retired, he took a voluntary retirement and then what happened is Meenakshi Nevatia को अपॉइंट कर दिया गया है as the MD. उसके साथ साथ एक और उनको पोस्ट दिया गया है of the additional director, right? Now Pfizer we know it's a pharma brand. Now मीनाक्षी को इससे पहले 30 years का एक्सपीरियंस है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, मैकेंजी एंड को में, नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल्स में, एंड लेटेस्ट शी वाज एसोसिएटेड विद स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन एज वेल, राइट. उससे पहले अगस्त 2022 में मीनाक्षी नेवाटिया को एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था ऑफ APAC मेडका, विच इज द एशिया पैसिफिक मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन का चेयरपर्सन फॉर द इंडियन कमिटी, द इंडियन एग्जीक्यूटिव कमिटी, राइट. नाउ व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट द फाइजर के CEO एंड चेयरमैन, वो कौन है? इट इज डॉक्टर एल्बर्ट बोर्ला, राइट. ही इज द CEO एंड चेयरमैन ऑफ Pfizer. Moving further, we have Rohit Sharma became the first Indian captain to score centuries in all 3 formats of cricket, right? तीनों के तीनों फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में, बी इट इंटरनेशनल क्रिकेट और ऑल द 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, रोहित शर्मा पहले ऐसे इंडियन कैप्टन बने हैं जिन्होंने तीनों के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लिया है. दिस पर्टिकुलर थिंग कैन कम इन लाइक अ 1-liner क्वेश्चन. स्पोर्ट्स कैटेगरी से रिलेटेड है, 1-liner क्वेश्चन में आपके न्यूज आ सकती है, राइट. जो लेटेस्ट सेंचुरी है वो नागपुर टेस्ट मैच में हुई थी, विच वॉज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. दैट वॉज रोहित्स फर्स्ट एज अ टेस्ट कैप्टन, राइट. ही हैज 300s in one-day internationals and 2 in T20 internationals when he was leading India as the captain, right. So he has become the first Indian captain to secure or to score centuries in all 3 formats of cricket, right. आपको एक direct 1-liner question इस पर आएगा, that which is that one Indian captain who has secured century in all 3 formats of cricket, and that is Rohit Sharma. You will get a 1-liner question on this. Moving further, we have Maharashtra finishes in first position in खेलो इंडिया यूथ गेम्स, राइट. हमें पता है, हमने कुछ टाइम पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पढ़ा था. सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या है, महाराष्ट्र ने फर्स्ट पोजीशन पे क्या किया है, फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, महाराष्ट्र विनर रहा है. नाउ इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का कहाँ पर हुआ था ये आपका, द होस्टिंग सिटी वॉज भोपाल. Bhopal was the hosting city in the year 2022. Now you have to keep in mind that 2 टाइप की न्यूज आपसे पूछी जा सकती है. एक तो आपको न्यूज पूछा जा सकता है ऑफ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स events. These are the 2 types of news that they can ask you. They can ask you news about sports or sports events. Sports events कैसे, जैसे आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, it is the sports event जिससे related they can ask you the news about, right. महाराष्ट्र ने 161 मेडल्स जीते हैं जिसमें 56 गोल्ड्स हैं. नाउ हरियाणा जो था वो आपका फर्स्ट रनर अप रहा है, मतलब हरियाणा सेकंड पोजीशन पर रहा है जिसमें उन्होंने 128 मेडल्स जीते हैं, राइट. सो यूजुअली दे विल नॉट आस्क यू द मेडल टैली एक्सेप्ट महाराष्ट्र और एक्सेप्ट द विनिंग पोजीशन, ठीक है. तो आपको महाराष्ट्र का पता होना चाहिए, 161 मेडल्स जिसमें 56 गोल्स हैं, इससे ज्यादा एंड बियॉन्ड दिस दे विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन. Yes, what they can ask is that Maharashtra has come on the top position and Maharashtra has succeeded which other, state. So Maharashtra has, beat which other state, that is Haryana. Okay. Now this year, in the year 2022, it was the 5th edition of Khelo India Youth Games. कौन सा edition था? 2022 में it was the 5th edition, right? Now अगर हम बात करते हैं थर्ड रैंक पर कौन है, इट इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश इज एट रैंक 3rd, ऑलराइट. महाराष्ट्र इज एट रैंक 1, हरियाणा इज एट रैंक 2, मध्य प्रदेश इज एट रैंक 3. उसको 96 मेडल्स मिले. नाउ टोटल इफ आई हैव टू टेल यू,
36 states and UTs के athletes have participated in this particular game, and इसमें girls का participation was about 40%. एंड इंटरेस्टिंगली बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पार्ट था, राइट? अ लॉट ऑफ वाटर गेम्स, अ लॉट ऑफ न्यू स्पोर्ट्स वर अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया youth games. Kayaking, canoeing, canoe slam, fencing, all these were a part of Khelo India games, जो कि पहले नहीं थे, और इस साल देखा गया कि 40% of the women participated in that, right? होस्टिंग सिटीज कौन कौन सी थी? मैंने आपको बताया भोपाल, उसके अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, माहेश्वर, मंडला, बालाघाट, इन सब में भी कुछ कुछ गेम्स हुए थे. बट अगर केवल होस्टिंग सिटी पूछा जाएगा, इन ये जितने भी ऑप्शंस है उसमें से अगर आपको कोई है, यू कैन मार्क द राइट आंसर. अदरवाइज भोपाल भी अगर ऑप्शन में आएगा, यू कैन मार्क इट एज द राइट आंसर. नाउ व्हेन आई से खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2018 में, राइट? उसके बाद 2019 में हुए थे, थर्ड हुआ था 2020 में, फोर्थ हुआ था 2021 में, और फिफ्थ हुआ था 2022 में. अगर आप यहाँ पर विनर देखो, अगर आप विनिंग स्टेट देखो, महाराष्ट्र हैड वन इट थ्राइस. महाराष्ट्र ने 2022 में टॉप मेडल टैली लेकर तीसरी बार विनर बना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, राइट? एंड इंटरेस्टिंगली अगर आपको देखा जाए, इसमें 2 ही स्टेट्स हैं जो आपके टॉप 2 में हैं, दैट इज महाराष्ट्र एंड हरियाणा. जिस साल महाराष्ट्र जीता है उस साल फर्स्ट रनर अप कौन रहा? हरियाणा. सो अगर मैं बताऊं 2019 में अगर महाराष्ट्र विनर रहा, महाराष्ट्र ने किसे हराया? हरियाणा को. अगेन 2020 में महाराष्ट्र ने किसे हराया? हरियाणा को. अगेन 22 में महाराष्ट्र ने किसे हराया? हरियाणा को. सो इट वॉज नथिंग न्यू विच हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर एडिशन एज वेल. महाराष्ट्र ने हर बार हरियाणा को हराया है, और अगर हरियाणा जीता है तो उसने कौन से स्टेट को हराया? महाराष्ट्र को. वेरी इजी, राइट? 2018 में विनर हरियाणा था, उसने महाराष्ट्र को हराया. 2021 में विनर हरियाणा था, उसने किसे हराया? महाराष्ट्र को. सो दिस शोज दैट दीज टू स्टेट्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, दे हैव वेरी गुड एथलीट्स, राइट? सो टॉप 2 में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूजन हो गई है, तो महाराष्ट्र और हरियाणा याद रखना. टॉप 2 में यही आपकी यूजली 2 स्टेट्स रही हैं जब तक आपका क्या है, जब से आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट हुआ है, राइट? With this, we have covered all the important news which had happened from the 10th to the 12th of August, to 12th of February. Thank you so much, guys. Keep smiling, keep learning, keep preparing for your boards and your entrance exams also. Thank you so much for staying tuned. If you like this video, give it a thumbs up, hit that like button, subscribe to Pratham Test Prep's channel if you haven't done already. And this is Rohit Sharma signing off, and we shall be meeting super soon in the next video, that is on Friday. Bye guys, take care.